Now today, let's start with chapter number 2, Windows 10. In this chapter, I will tell you about operating system. We will study about the version of MS Windows, what its features of Windows 10, starting Windows 10, desktop, and then components of desktop. Now, operating system. An operating system is very important part of computer. A computer is of no use without an operating system. बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर किसी यूज का नहीं होता है. इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट टेल्स कंप्यूटर हाउ टू वर्क. एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे कैसे काम करना है. इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइस. क्या कंट्रोल करता है? वर्किंग को करता है डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइस की दैट आर अटैच्ड टू अ कंप्यूटर एंड ऑल्सो कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोग्राम्स ऑन टू विच यू वर्क. सारे प्रोग्राम्स का रिकॉर्ड रखता है जिसपे आप क्या करते हैं? वर्क करते हैं. Now, Microsoft Windows, Linux, Macintosh OS are some of the example of operating system. These are the example of operating system. Then we have different version of Windows. We have Windows 98, Windows XP, Windows 7, Windows 6, Windows 8, Windows 10, Windows 11. And Windows 11, it is the latest version of Windows. We will learn Windows 10 in this chapter. But in this chapter, I will tell you about Windows 10. Now, features of Windows 10. What are its features? The start menu was removed from desktop in Windows 8, but it was back in Windows 10. देखिए जो desktop window थी, वो remove कर दी गई थी Windows 8 से, लेकिन दोबारा से वापस में लेके आए हम. It includes best feature of Windows 7 and Windows 8. Windows 10 comes with great inbuilt store. क्या है इसका? great inbuilt store है that helps you to stay in touch and has many apps, games and entertainment that before many are free. ये free of cost है and it is more interesting. ज़्यादा interesting है. It has new themes, icons and it has new search tool called Cortana which helps you to find things and get the information can be searched by talking to Cortana. आप Cortana से बात करके information को search कर सकते. Windows 10 has a task view button to the right of the search button. It will show your all the open windows on your desktop. Then how to start a Windows 10? Now starting Windows 10, as we switch on the computer, the Windows operating system gets loaded to the memory automatically. देखो जैसे ही आप क्या करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे ही आप क्या करोगे कंप्यूटर को ऑन करोगे, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो जाएगा इनटू मेमोरी ऑटोमेटिक. व्हाइल लोडिंग द पिक्चर ऑफ विंडो, फ्लैग्स अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड आफ्टर फ्यू सेकंड्स द स्क्रीन अपीयर. एक फ्लैग अपीयर होता है, उसके थोड़ी ही देर बाद क्या होता है? आपकी स्क्रीन अपीयर हो जाती है. इन सेम वे कंप्यूटर चेक्स इफ दे हैव परमिशन टू यूज द कंप्यूटर और नॉट. It compares the username entered by us and name of the user that have been stored on. And you have to write the name of user that is stored on it. Each user has a key is called password. सबके पास एक key होती है, हम password कहते हैं. And after entering the correct username and password, welcome screen appear. जैसे ही आप अपना correct username और password डालोगे, तो एक welcome screen appear करती है. After welcome message, we will see a screen called desktop given. Like this, a desktop will be there. We have different icons over there. Here we have start button. Then we have taskbar and notification area. जो भी notification है वो आपके notification area में है. Desktop. First screen that appears after loading the operating system with labeled picture. Labeled picture के साथ जो आपकी first screen appear होती है उसको हम desktop कहते हैं. It is just like a study table, जैसे आपकी study table होती है, where you keep all the useful things or frequently used things like pen, pencils, notebooks. In the same way, computer desktop contain all useful and frequently used programs. Now, what are the components of desktop? Icons, if we talk about, the small labeled pictures on the desktop are called icons. Icons may represent a file, folder or program. And icons are used to open specific program. जो भी आपको कोई specific program का open करना है तो आप इसका यूज करते हो icons. आपको क्या करना होता है? Just you have to double click on. Some of the commonly used icons of the desktop are this PC और this cycling. सबसे commonly used होते हैं ये दो ही हैं.
This PC, a computer stores data in a hard disk, DVD, pen drive, and many other storage devices. This data can be accessed from the icon, this PC. When we double click on the icon, you will get the this PC window appear. जैसे आप double click करोगे, this PC की window appear हो जाएगी, and the different icons can be seen with the computer's window. Show the space on the hard disk divided into different sections called partition. They are usually denoted by letters C, D, E, F. To store and access data from computer. इसमें आप क्या कर सकते हो? डाटा को स्टोर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. Recycle bin. It is just like a dustbin in our house. It keeps the file or folder we deleted till we empty it. हम क्या कर सकते हैं? इसमें फाइल और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, और मतलब जब तक आप कहते हैं आपने डिलीट करके जा रहा है तो रिसाइकल भी बनेगा, उसके बाद उसको आप एम्प्टी भी कर सकते हैं. इफ वी डिलीट एनी फाइल और फोल्डर बाय मिस्टेक, देन वी कैन रीस्टोर इट फ्रॉम रिसाइकल. आपने क्या करा? कोई भी फाइल और फोल्डर को बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया, देन यू कैन गो टू रिसाइकल बिन एंड यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन रीस्टोर इट बाय डबल क्लिक. इफ you have also deleted it from recycle bin, it will be permanently deleted, it will be not there in your computer. Then we have taskbar, the bar at the bottom of the screen. मैं आपको दिखाई थी, बॉटम में होती है. यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन होता है, and on the left corner and clock on the right corner. It also shows program that is being used. जो भी प्रोग्राम आप यूज कर रहे हो वो आपको यहाँ पे शो. Then we have start button. This is your start button that appears in the leftmost corner of the taskbar, and it is known as key to use window. When we click on the start button, list of optional program called start menu appear, और आपको window 10 यहाँ पे दिखाई. It's a combination of 7 start menu and 8. जो आपकी window 10 की जो start menu है किसका combination है? Window 7 और window 8. Then, on the left of window 10, the middle section shows the most used and many recent added apps. जितने भी recent added add हो गया, जिनको आप use कर रहे हो, आपको कहाँ दिखेंगे? टास्क बार में. Then, to show all apps installed in a system, what you will do, you will select all apps option. यहाँ पे all app का option आता है, आप इसको select करेंगे. And then installed app or program will be shown to you. And then you can, whereas on the right side of the start menu, we have window 10 tile. It display information that are useful with class. जैसे आपको weather display करेगा, temperature display करेगा, कोई news headline है, आप उनको rearrange भी कर सकते हो, resize भी कर सकते हो, types को move भी कर सकते हो. Then we have search box. The search box is used to search the program or app on the screen quickly. And for example, to open a WordPad, we can type the WordPad in the search. भाई आपको वर्ड पैड ओपन करना है तो आप सर्च बॉक्स में जाके वर्ड पैड डालेंगे, आपको जो वर्ड पैड है वो आपको शो दे. नाउ टास्क व्यू बटन ये आपका राइट साइड में होता है सर्च बॉक्स के. इट इज क्विक वे टू सी एवरी विंडो ऑन आवर डेस्कटॉप एट वंस एंड क्विकली सेलेक्ट वन वी वांट टू वर्क. और आप क्विकली सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको क्या करना है, जिस पे भी आपको वर्क करना. देन वी हैव द नोटिफिकेशन एरिया that is present at the right corner of the taskbar. It has a clock, इसमें clock होती है और कुछ small icons होते हैं, and it tells the status and important notification about the program running on your computer. At the end of notification area, there is a peek button. एक peek button होता है, वहाँ पे आप उसको क्लिक करोगे, आप minimize भी कर सकते हो जो भी विंडो ओपन है और आपको डेस्कटॉप पे दिखाई दे. तो मूव द टास्क बार, फॉलो दी स्टेप्स. अब आपको टास्क बार को मूव करना है तो आपको स्टेप्स फॉलो करोगे. क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड देन ड्रैग द माउस. फिर आप माउस को ड्रैग करेंगे एंड द प्लेस ऑफ द स्क्रीन यू वांट टू मूव द टास्क बार, लाइक यू वांट टू मूव टास्क बार टू बी positioned vertically on the right side of the screen. After you move the mouse pointer to the position of the screen where you want the taskbar, release the mouse. यहाँ पे भी आप चाहते हो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जाके रिलीज कर सकते हो माउस. The taskbar will be moved to a desired option, and if the taskbar of your computer is not moving, it means it is blocked. अब आपको ये करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे उसको अनलॉक करने के लिए. पहले आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्कबार, then select lock the taskbar option. शॉर्टकट मेन्यू में the taskbar will be unlocked and can be moved. अब आप इसको इजीली मूव भी कर सकते.
Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.